Hello and a very warm welcome to today's session brought to you by Testbook Super Coaching. And I hope आप लोगों ने news देखी होगी. We have finally made it to the World Cup finals. It's a historic moment. India has beaten New Zealand. And अगर आपने end तक ये पूरा का पूरा match देखा है, so again, making sure that you're being very consistent, making sure that you are a performer, and those mini battles that you actually win finally make for a historic recipe. Let's just keep our fingers crossed that we also gets the World Cup title. Good evening, everybody. Good evening. Good evening, Angan, Hopkins, Ravi Pandey, Queen Khan, Dominator. Okay, without further ado, let's just very quickly get started on this positive note of India winning the match, the semi-finals against New Zealand, and of course blocking their seat in the finals that's going to be conducted on 19th of November. So, jaldi se same spirit ke sath, let's just quickly get started. I'll also share the video that we are live with everybody, so that everybody knows that we have started. Okay, 1 minute. Uh, Okay, so let's very quickly get started. Let's very quickly get started. आज का जो main topic है वो ये है और आज और कल दोनों दिन अब a lot of times ये question आता है कि हम लोगों को literary theory कैसे पढ़ना है. What is supposed to be our strategy that we need to follow in order to study literary theory. Literary theory के क्या important components है जो हमें definitely cover करनी चाहिए. और यहाँ पर there are a few things that you definitely have to remember. There are a few things जो आपको definitely याद रखनी है. वो ये है कि लिटरेरी थ्योरी में कई सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं जैसे आपके कॉमनली रेफर्ड सोर्सेज में से एक सोर्स पीटर बेरी है और आज हम थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे दैट व्हेन वी आर यूजिंग अ बुक लाइक पीटर बेरी हाउ इज इट दैट वी आर सपोज टू बी अप्रोचिंग इट कैसे हमारा अप्रोच रहना चाहिए हाउ इज इट दैट वी नीड टू कवर पीटर बेरी एंड टू एंड दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट विल बी लुकिंग एट तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स जस्ट वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड आप लोगों का स्कोर बूस्टर बैच इज ऑब्वियसली अप एंड रनिंग आज भी today of course during the 8 p.m. class we were looking at Indian drama. We covered writers like Kusharan Das. We covered writers such as Manjula Padmanabhan. So classroom students, I hope आप अच्छी तरह से you will be revising all of that and coming. And of course, in the question booster class, we looked at a lot of terms associated with language because we were practicing language properly and thoroughly. तो वो चीज हम लोग देख रहे थे. So I hope everybody is revising, everybody is actually reviewing because that is yes, so that is of course very important. Yeah, Tahmina's like Shami got 7 wickets. Of course, he was the literally the person who drove everything towards the end. So I think that was really nice. Of course, there. Cheers to Shami and the entire playing squad. And I think cheers to all the classroom students also. After 8 baje, 9:30 baje, you were all with me, and you were of course studying alongside. So that just salute to your spirit. जल्दी से स्टार्ट करते हैं सो टुडे आर दिस इज डे this is day 3 but it's not on banned books. Banned books का डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे हैं. Today we are talking about Peter Berry and how can you actually study Peter Berry better. आपका एक PDF I think I still need to join myself also as an admin on this Telegram group. लेकिन English Literature Hustlers पे तो मैंने शेयर कर दिया था फर्स्ट डे का PDF. I'll just take the admin rights and I'll be active on this particular group as well ताकि मैं आप लोगों के polls start कर सकूं क्योंकि quiz and polls करना they are very important for everybody. So please don't forget to join ये वाला PDF भी और कल वाला PDF भी और उधर सारे के सारे मैं दोबारा से नीरजा मैम टेक्स्ट बुक पे I'll put it across. So please make sure that you're joining in. Polls भी आपके start कर देंगे ताकि every day you're at least practicing 20 to 25 questions on the Telegram platform itself, which will be a good pickup for you. So that is something that we'll be looking at, right? Of course, everybody is like, talking about the match. So everybody
नाइस, दैट्स गुड थिंग। अच्छा, जल्दी से पहले स्टार्ट करते हैं आइस ब्रेकर क्वेश्चन से। ऑलराइट, टुडे आई एम गोइंग टू बी, ऑफ कोर्स प्राइमरी एजेंडा ये है कि अगर जैसे पीटर वेरी की बुक होती है, हाउ इज इट दैट वी नीड टू स्टडी, हाउ इज इट दैट वी नीड टू लुक एट। अच्छा, जो मैंने ये डेक बनाई थी एट दैट टाइम, इट वाजंट रियली क्लियर दैट वी वर स्टिल इन दैट मैथ स्टेज, so I've added one slide as well, but I think before the class only we got to know the result, so that was a good thing. चलिए जल्दी से यहाँ पर मुझे बताइए, what do you think is the right answer over here? What in your opinion is the right answer? ये आपका question आ गया है, and you need to tell us what is the correct answer. ठीक है? The lives of which of the following, तो यहाँ पर properly take a look at it. And please start answering. The lives of which of the following writers has been subject matter of the novels of Anthony Burgess? Anthony Burgess के जो novels में इनमें से कौन से writers के life के बारे में बताया गया? You can actually pick two. So यहाँ पर when you are trying to answer, you can actually pick two works as well. आप दो works को भी pick कर सकते हैं. There is no compulsion of only selecting one work. You can actually select two works as well. So what is the correct answer over here? यहाँ पर correct answer क्या हो जाता है? What will be the right answer? Okay, I think a lot of you have started answering as well. Anthony Burgess. Anthony Burgess के time chronotope क्या है? Time chronotope is 1917 to 1993. तो Burgess का जो time chronotope है, what is the time chronotope of Burgess? It is 1917. Why is this not working? Right? Definitely get it. Okay, so what is Anthony Burgess's time? One second. What is Anthony? Yeah. Okay, perfect. We've got it over here. So इनका जो time chronotope है, that is 1917 to 1993. 1917 to 1993. This is Anthony Burgess, and Anthony Burgess किसके लिए जाने जाते हैं? He is actually known as writing works based on lives of poets. Poets के lives के ऊपर Anthony Burgess ने काफी लिखा हुआ है. If you remember Christopher Marlowe की death के बारे में, he is writing it, right? So Marlowe is a person, he has written A Dead Man in Deptford. So Marlowe का कौन सा वर्क है? Dead Man in Deptford. So Dead Man in Deptford, Dead Man in Deptford. Christopher Marlowe जो कि he was killed in a duel. So Dead Man in Deptford, ये आपका नेट में पूछा गया है. ये क्वेश्चन भी आपके नेट के पेपर से उठाया है, 2020 के नेट के पेपर से उठाया है. तो मार्लो के बारे में ही इज राइटिंग, राइट? मार्लो के बारे में ही इज राइटिंग, क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में इज राइटिंग. ही इज ऑल्सो राइटिंग, यहाँ पर इफ यू विल बी एबल टू सी, ही इज ऑल्सो राइटिंग अबाउट जॉन कीट्स. ठीक है, मार्लो के बारे में तो लिखा ही लिखा है, बट ही इज ऑल्सो राइटिंग अबाउट जॉन कीट्स. सो कीट्स के बारे में भी ही इज राइटिंग. आई थिंक आई genuinely have to get the pen tab. Okay, so John Keats के बारे में also he has written. John Keats के बारे में also he has written. And when we are talking about Keats, right? When we are looking at Keats, so Dead Man in Deptford, he is written on Christopher Marlowe. And Keats के जो last months थे, वो इन्होंने लिखा है एक work called Abba Abba. So Abba Abba करके एक जो work है, right? Abba Abba करके जो work है, he has written about John Keats's last days. जो last days John Keats के थे 1977 में. Abba का मतलब होता है father, right? What does Abba means? Abba means father altogether. ये Anthony Burgess के epitaph के ऊपर भी Abba लिखा हुआ है, right? So 1977 Abba, then Dead Man in Deptford और Marlowe's Life. So Anthony Burgess ने ये सारा लिखा है. By the way, Anthony Burgess ने Nothing Like the Sun भी लिखा है. Nothing Like the Sun किस पे based है? Nothing Like the Sun. So Anthony Burgess has also written another work which is called Nothing Like the Sun. Nothing Like the Sun. Nothing Like the Sun. Nothing Like the Sun किसके ऊपर based है? It's based on the life of Shakespeare. It is based on the life of William Shakespeare. ठीक है? So Nothing Like the Sun is based on the life of Shakespeare. Dead Man in Deptford is based on Marlowe's life. And Keats के जो last days थे, he is capturing it in Abba 1977. So Anthony Burgess 1917 to 1993 is writing about the lives of poets, और ये एक particular work आप देख पाते हैं. ठीक है? Excellent, very nice, Tanmay, very nice, very nice. Nothing Like the Sun, very good.
Okay, who are the people associated with the following words? Archie writing, इसको आर्ची कृत्य भी कहा जाता है. This is a term which tells you about speech and writing. ये किसने दिया है? Cyborg word किसने दिया है? Gynotext किसने दिया है? Hermeneutic circle किसने दिया है? Who are the people who are associated with these terms? जल्दी से बताइए. Who are the people that you are able to see are associated with these terms? By the way, next week से आपका daily 10:30 पे महा marathon होगा of question practice. We'll be looking at questions, we'll be covering them in mocknet format. So please block your calendars also for a proper practice altogether. That will be important. चलिए जल्दी बताइए what is the right answer over here? Archie writing. Okay, Ravi, no, not exactly, बच्चे, not exactly. Voice is not clear. Okay, at least voice is audible. I'll just try to see. Yes. Very good, Tahmina. Tahmina has given the first right answer, right? Archie writing is associated with Derrida. Archie writing is associated है? Archie writing is associated with Derrida, and Derrida is telling us about the relationship between speech and writing. Archie writing किससे associated है? It is a term that tries to tell us the relationship between speech and writing. Speech को हम writing से better consider करते हैं. That is not what Derrida actually believes in. Okay. साइबॉर्ग किसने दिया है? साइबॉर्ग मैनिफेस्टो 1985 कौन लिख रहा है? हु इज द पर्सन हु इज राइटिंग दिस वर्क? साइबॉर्ग मैनिफेस्टो. साइबॉर्ग मैनिफेस्टो 1985 डोना हैरवे लिख रही हैं. ठीक है, 1985 कौन लिख रहा है? डोना हैरवे लिख रही हैं. डोना हार्वे, हैज एनीबॉडी गॉट दिस राइट? डोना हैरवे. सो बेसिकली क्या होता है दैट साइबॉर्ग इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल क्रीचर. और ये जो साइबॉर्ग है, दिस साइबॉर्ग आपका मैल्फ्रेड क्लाइंस, मैल्फ्रेड क्लाइंस, CLYNES, मैल्फ्रेड क्लाइंस ने नेथन क्लिन के साथ करा था. दे हैड रिटन दिस आर्टिकल कॉल्ड साइबॉर्ग्स एंड स्पेस. लेकिन डोना हैरवे क्या करती हैं, इसमें जेंडर का पर्सपेक्टिव ले आती हैं, राइट? सो डोना हैरवे इन साइबॉर्ग मैनिफेस्टो ट्राइज टू टेल यू अबाउट द फैक्ट कि हमारी कन्वेंशनल बाइनरी आइडेंटिटीज नहीं होनी चाहिए, मेल फीमेल ब्लैक एंड व्हाइट. हमारी हाइब्रिड आइडेंटिटीज होनी चाहिए, जैसे साइबॉर्ग है. साइबॉर्ग इज अ साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म, राइट? साइबॉर्ग इज अ साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म. तो एक मर्जर हो रहा है, राइट? आपका साइबॉर्ग एंड ऑर्गेनिज्म के अंदर व्हाट आर यू एबल टू सी दैट देयर इज अ मर्जर ऑफ सॉर्ट्स दैट इज टेकिंग प्लेस. सो साइबॉर्ग मैनिफेस्टो डोना हैरवे से एसोसिएटेड है. शी इज एन अमेरिकन फेमिनिस्ट. डोना हैरवे शी इज राइटिंग 1985 में. जेनोटेक्स किसने लिखा है? आई एम नॉट सीन. सो जेनोटेक्स एंड फोनोटेक्स, ये टर्म्स जूलिया क्रिस्टेवा से एसोसिएटेड है. ठीक है, ये दो टर्म्स कौन दे रहा है? यू कैन एक्चुअली इवन राइट इट डाउन व्हेन वी आर लुकिंग एट, राइट, बोथ ऑफ देम. जेनोटेक्स, फेनोटेक्स. जेनोटेक्स इज द बॉडी ऑफ बायो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो आपके सोशियोलॉजिकल वर्ल्ड कंट्रोल करते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट. जेनोटेक्स एंड फेनोटेक्स, दीज आर कॉन्सेप्ट्स दैट आर गिवन बाय क्रिस्टेवा. ठीक है, ये कौन कॉन्सेप्ट्स दे रहा है? Julia Kristeva is the person who's associated with these terms. Okay, and hermeneutic circle ये आपका reader response theory का एक बहुत important component है. Who are the people associated with these terms? hermeneutic circle का कौन दे रहा है? Very good, very good, very good. A lot of you are talking about it. Yes, Isser can be one, right? Wolfgang Isser can be one. Martin Heidegger can be there. Hans Georg Gadamer can be there, right? और ये आपके जब एग्जाम में आया था, so slide marker was the right answer. Okay, but you can keep that in mind. So hermeneutic is the technique of interpretation. ठीक है, तो ये आप प्लीज याद रखिएगा. आर्ची राइटिंग, डेरिडा, साइबोर्ग मैनिफेस्टो, डोना हैरवे, जेनोटेक्स, फेनोटेक्स, जूलिया क्रिस्टेवा. hermeneutic सर्कल के अंदर आपके सारे के सारे आ रहे हैं. हैंस रॉबर्ट गदामर आ गया, राइट? हैंस जॉर्ज गदामर आ गया, मार्टिन हाइडेगर आ गया, या फिर इवन फॉर दैट मैटर अगर आपका शेल मैचर भी आ रहा है. सो ऑल ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद इट. ओके, सो यू विल ऑल हैव टू कीप दैट इन माइंड. क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं. अरेंज द वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं. अगर आपको सही आंसर नहीं भी पता है, इफ यू डू नॉट नो कि आप अगर ऑर्डर में इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो कंट्री वाइज, सिम्बोलीन, स्पेनिश ट्रेजेडी, राइवल्स कैसे करेंगे, अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको पता होना चाहिए कंट्री वाइज एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है. राइवल्स आरबी शेरिडन लिख रहे हैं, तो आरबी शेरिडन का राइवल सबसे लास्ट में होगा. देन कंट्री वाइज होगा, स्पेनिश ट्रेजेडी पहले आएगा, प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट और फिर सिम्बोलीन.
मतलब अगर आपको नहीं भी पता है कि इनका एग्जैक्ट डेट क्या है, आप एटलीस्ट ये बना सकते हो कि पहले आपका स्पेनिश ट्रेजेडी आ रहा है थॉमस किड का, देन सिम्बलिन आ रहा है which is kind of a tragic comedy of the later plays that Shakespeare was writing, then of course आपका कंट्री वाइफ एंड फाइनली राइवल्स। तो ये करेक्ट अप्रोच होता है। स्पेनिश ट्रेजेडी कब परफॉर्म हुआ था? स्पेनिश ट्रेजेडी आपका 1587 में आ रहा है। When is the Spanish tragedy coming? Spanish tragedy by Kid। कल ही हम लोगों ने ये भी बोला था यूट्यूब की क्लास के अंदर, we had talked about university bit, so Kid ने लिखा है 1587 में, right? That is when it's coming। Cymbeline जो है, this is a part of the later plays of Shakespeare, so 1608 to 1610 ये जो plays आ रहे हैं आपके। Then Comedy of Manners, Country Wife, विलियम वाइटशली ये जो लिख रहे हैं, when is this coming, right? When is this coming? When William Wycherley is writing it, 1675 में, William Wycherley is writing the country wife, right? He is writing the country wife। 1675 में he is writing the country wife। एंड राइवल्स कब आ रहा है? बाय आरबी शेरिडन। आरबी शेरिडन का राइवल्स आ रहा है 1775, जबकि आपकी डिक्शनरी भी आ रही है, राइट? So 1775 is when you are able to see that this particular work is also coming in. So chronological questions के अंदर we are able to see that this is how we can understand, address those questions overall। अगर आपको exact date नहीं भी पता है तो भी आप उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट कि आप ये अटेम्प्ट ही नहीं करना है, दैट शुड नॉट बी द वे एट ऑल। ठीक है। Who among the following wrote Mazeppa? Who among the following wrote Mazeppa, a long narrative poem about 17th century military leader of Ukraine? तो Mazeppa किसने लिखा है? Who has written Mazeppa, this long narrative poem about 17th century military leader of Ukraine? Who's the writer who's written this? Mazeppa ना 1819 में आ रहा है। किसने लिखा है? ठीक है। ये 1819 के अंदर ये वर्क आ रहा है। दिस वर्क इज कमिंग इन 1819। 1819 में दिस वर्क इज कमिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। लॉर्ड बायरन। किसने दिया? डोमिनेटर ने सही जवाब दिया। रवि, नो, पीडी शेली इज नॉट द राइट आंसर। Mazeppa is by Lord Byron based on the popular legend of Ivan Mazeppa who later became the military leader of Ukraine। तो ये बायरन लिख रहे हैं। ठीक है। So don't go wrong with these kind of questions. These are literally brownie points that you're getting. So Byron absolutely is the right answer। ठीक है। ये romantic writers के जो important works हैं उनको भी आप अच्छे से कर लीजिए। Which of the following journal publishes articles related to critical theory exclusively? Publishes articles related to critical theory exclusively। कौन सा है? What is the right answer over here? Which of the following journals publishes articles related to critical theory exclusively? क्रिटिकल थ्योरी एक्सक्लूसिवली। ये 1971 में आपका आ रहा है। दिस इज कमिंग इन 1971 एंड ये ओरिजिनल वर्क जो है क्रिटिकल थ्योरी से रिलेटेड वो सारे के सारे वर्क्स को पब्लिश करता है। दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी। व्हाट इज द राइट आंसर? डोमिनेटर ने सही जवाब दे दिया। डाइक्रिटिक्स इज एब्सोल्युटली राइट, राइट? डाइक्रिटिक्स इज द राइट आंसर दैट यू आर एबल टू सी। डाइक्रिटिक्स इज द राइट आंसर ओवर हियर। वेरी गुड। एक आपको order of publication में you have to arrange these works, right? You have to arrange these works in the order of publication as they appear, okay? As they appear। So आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये क्रोम येलो किसने लिखा है? क्रोम येलो is written by Aldous Huxley। Huxley ने ये work लिखा है which came in 1921। Okay, so when we are looking at order of publication, who is the writer? आपको ये भी पता होना चाहिए that writer है कौन, right? आपका ये जो writer है ये है कौन? So Huxley is writing। Aldous Huxley is the writer। Aldous Huxley। Aldous Huxley is the writer। So Chrome Yellow is something that he is writing. It was published in 1921। Sons and Lovers is by D.H. Lawrence। It's an autobiographical work that is coming in 1913। Star Equilibrium, Blood Consciousness, ये सारे terms important हो जाते हैं। One Day Novel में which is talking about stream of consciousness is Mrs. Dalloway, right? Stream of consciousness जो technique आ रही है that is coming in Mrs. Dalloway which was published in 1925। ठीक है। Mrs. Dalloway was published in 1925। Please remember that। And Portrait of the Artist as a Young Man, Portrait of the Artist as a Young Man, this is coming from the pen of James Joyce। और ये कब आ रहा है? When is it coming? 1916।
ठीक है, दिस इज कमिंग इन 1916। अगर आपने रॉटलेट से भी अपना मॉडर्निज्म पढ़ लिया है, यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैं देख रही हूँ कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, सम ऑफ यू हैवंट। सबसे पहले तो आई थिंक बाकी आपको पता होंगे कि पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट इज अ यंग मैन इज कुंस्टून रूमान बाय जेम्स जॉयस, नॉवल व्हिच इज टेलिंग यू द डेवलपमेंट ऑफ अ राइटर। लेकिन क्रोम येलो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज इसको लिख लीजिए, और कई बार ऑप्शंस पास पास भी हो जाते हैं, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इसके बाद आई क्विकली टेल यू द टॉपिक फॉर टुडे, द एजेंडा फॉर टुडे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। Which of the following works? Which of the following works does Walter Pater regard as examples of great art in his essay style? Art for art's sake style के अंदर which are the works that he's talking about? Which are the works that he's talking about? काफी सारे लोगों ने, there are two actually. There are two actually. ठीक है, so B is also there and C is also there. ठीक है, so आपका डिवाइन कॉमेडी भी है और आपका लेस मिजरेबल्स भी है। so वो ग्रेट आर्ट स्टाइल में किसको बोलते हैं? ग्रेट आर्ट स्टाइल में ही इज एक्चुअली टेलिंग यू अबाउट बोथ ऑफ दीज वर्क्स। ठीक है, ही इज टेलिंग यू अबाउट डिवाइन कॉमेडी ऑल्सो एंड लेस मिजरेबल्स ऑल्सो। आप आज का आपका होमवर्क यही है, प्लीज मेक श्योर कि आप 2020 मॉर्निंग शिफ्ट पेपर 2 के बाकी सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही एक बार आज रिवाइज कर लेंगे बिफोर टुमारोज 10:30 पीएम क्लास। ठीक है, बिफोर आई मीट यू एट 10:30 पीएम टुमारो, आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू रिवाइज इट। मैं जब ये डेक बना रही थी एट दैट टाइम, we were still playing the match. I just put a slide over here, but I think at the beginning of the video only we were very clear that we finally won the match and we made our place into the finals. So of course that we've already spoken at the beginning of the class itself. Of course, Kohli played very well. You had Shami, as Temina was talking about, taking 7 wickets, and a completely splendid performance by the entire team that you were able to see. Right, first of all, the commendable total. This time, surprisingly, Gill also did not get out. So overall, a very good performance by Team India. So we also, please, team, all of you, you really need to work hard and give us the quantum number of GRFs as well. Okay, चलो अब जल्दी से let's move on to the topic of today. आज का जो हमारा टॉपिक है, we are primarily telling you, and आज और कल दोनों दिन, ठीक है, कल मैं आपको सारा स्टोन दूंगी। मैं टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे, वैसे इंग्लिश नेट हसलर्स पे तो इंग्लिश लिटरेचर हसलर्स पे तो मैंने सारा स्टोन का पीडीएफ पहले से दे दिया है। तो कल हम लोग सारा स्टोन देखेंगे, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पीटर बेरी। नाउ क्वेश्चन क्या आ जाता है? क्वेश्चन ये आ जाता है दैट व्हेन वी आर लुकिंग एट दीज वर्क्स, ठीक है, जैसे पीटर बेरी हो गई तो उसको कवर कैसे करना है, तो दैट इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। देखो, सबसे पहले पीटर बेरी का बेनिफिट क्या है? इजी वे में आपको सारी थ्योरीज पता चलती हैं, जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन मिलता है। पॉइंट नंबर 1, टॉपिक्स लाइक न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड कल्चरल मटेरियलिज्म जो ज्यादातर बुक्स में नहीं है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दैट इज द सेकेंड बेनिफिट। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो आपके न्यूली डेवलप्ड थ्योरीज है, जैसे आपका एनिमल स्टडीज हो गया, जैसे आपका इको क्रिटिसिज्म हो गया, जैसे आपका व्हेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मे बी बायो पॉलिटिक्स, जो मैं आपको काफी दिन से होमवर्क में दे रही हूँ, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। दैट इज द ओनली ड्रॉबैक। तो दैट मीन्स अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि पीटर बेरी करके मेरा उद्धार होने वाला है, दैट इज नॉट द केस एट ऑल। आपको ये दिस कैन बी अ फंडामेंटल बेस। जैसे विलियम जे लॉन्ग है, वैसे आप पीटर बेरी बन गया लिटरली, और सारा स्टोन भी वैसी ही एक किताब है विच रियली बिल्ड्स योर फंडास। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने पीटर बेरी से एक टॉपिक उठाया, जैसे फॉर इंस्टेंस मार्क्सिज्म उठाया, तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे? तो आप सबसे पहले जो आप पीटर बेरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आप पीटर बेरी में पढ़ रहे हैं, उनके फंडास को अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, पीटर बेरी जैसे आपको मार्क्सिज्म के बारे में बताएगा। अब देखो, जैसे अब पीटर बेरी में क्या मिसिंग हो जाएगा? पीटर बेरी में पोस्ट मार्क्सिज्म मिसिंग है। ठीक है, एक पूरा का पूरा टॉपिक आपका है पोस्ट मार्क्सिज्म, एक पूरा का पूरा आपका टॉपिक है नियो मार्क्सिज्म। नियो मार्क्सिज्म, पोस्ट मार्क्सिज्म, ये सारे टॉपिक्स जो है पीटर बेरी में आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको थोड़ी अपनी एडिशनल रिसर्च करनी पड़ेगी।
तो मार्क्सिज्म क्या है? मार्क्सिज्म इज दिस फिलोसॉफिकल बिलीफ वेयर वी आर एबल टू सी कि किस तरह से जो जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स है एंड जर्मन सोशियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक एंगल्स, वो फ्रेडरिक एंगल्स वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू टॉक अबाउट वुमेन्स राइट्स ऑन प्रॉपर्टी। तो फ्रेडरिक एंगल्स जैसे पीटर बेरी का जब आप फेमिनिज्म पढ़ोगे तो उन्होंने जहां पर फेमिनिज्म का फर्स्ट पेज पे ही ऑलिव स्क्रीनर बोला होगा, वहीं पे ही he'll tell you about फ्रेडरिक एंगल्स ऑल्सो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, आपका बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज मार्क्सिज्म? मार्क्सिज्म ये दो जर्मन जर्मन फिलोसोफर से एसोसिएटेड है, बोथ फ्रेडरिक एंगल्स एंड कार्ल मार्क्स, और इनका जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। बेसिकली मार्क्सिज्म क्या कह रहा है? मार्क्सिज्म बिलीव्स इन इक्वालिटी। मार्क्सिज्म इज ट्राइंग टू गो अगेंस्ट द कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर जहाँ पे वर्किंग क्लास लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी। ठीक है, डोमिनेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑल्सो बच्चे आई टेल यू, वो भी हम लोग करेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी लुक एट। ओके, okay, a lot of you are commenting on cricket also. Yes, of course. I think let's see who's going to be our contender tomorrow. We'll come to know who's going to be the contender. Will it be Australia or South Africa? Okay. Now looking at Marxism, जो Marxism है वो आपको क्या बताता है? Marxism आपको ये बताता है कि दो क्लास के बीच में स्ट्रगल चल रहा है। तो अगर आप पीटर बेरी को पढ़ रहे हैं तो पहले आपके ये फंडास भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आपका ये जो फंडास है वो एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। ये मार्क्सिज्म एज अ बिलीफ आपको क्या बता रहा है? इट इज ट्राइंग टू टेल यू अबाउट दिस क्लैश बिटवीन क्लासेस, जो क्लास स्ट्रगल आपका चल रहा है। और कौन कौन सी क्लासेस हैं? आपका वर्किंग क्लास है, प्रोलेटेरियट, ठीक है, और आपका बुर्जुआजी क्लास है। ठीक है, सो आपका आपका वर्किंग क्लास है, प्रोलेटेरियट, और वर्किंग क्लासेस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और मार्क्सिज्म क्या चाहता है? मार्क्सिज्म चाहता है ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ये जो इकोनॉमिक डिफरेंस है, इसको खत्म कर देना चाहता है। सो मार्क्सिज्म आपका क्या चाहता है? अल्टीमेट गोल ऑफ मार्क्सिज्म इज व्हाट? अल्टीमेट गोल ऑफ मार्क्सिज्म इज टू अशर एन इगैलिटेरियन वर्ल्ड, टू अशर एन इगैलिटेरियन वर्ल्ड जहां पर सारी चीजें, ये पेन सिर्फ मेरा पेन नहीं है या टेक्स्ट बुक का पेन नहीं है, ये पेन आपका पेन है, ये पेन रवि का है, नंदिका का है, नंदिता का है, डोमिनेटर का है, सुप्रतिम का है, कोमल का है, कस्तूरी का है, सबका पेन है। इट इज कम्युनिटी ओनरशिप, इट्स इगैलिटेरियन, इट इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल टुगेदर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए इवन इफ यू आर लुकिंग एट पीटर बेरी। ये तो मैं आपको इजी एग्जांपल एक दिया है मार्क्सिज्म का। ठीक है, तो आपको टर्म्स क्लियर होनी चाहिए हर एक थ्योरी से रिलेटेड। मैं बार बार बोलती हूँ, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हम पूरी जी जान से यहाँ पोर्टल पे भी मेहनत करेंगे। दीज आर वेरी स्कोरिंग यूनिट्स, इनको आप हाथ से मत जाने दीजिएगा। ठीक है, सो अगेन आपको बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, हैव्स एंड हैव नॉट्स। आपके प्रोलेटेरियट कौन है? आपके प्रोलेटेरियट हैं आपके हैव नॉट्स, जिनके पास कुछ आया नहीं है। दे आर एलियनेटेड वर्कर्स। ये एलियनेटेड वर्कर्स हैं, इनको पता ही नहीं है पूरा प्रोसेस का, बूर्जवा इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। दे आर स्किल्ड पीपल हु आर एम्प्लॉयिंग देम। दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी। सो बेसिकली मार्क्सिज्म किस पे बेस्ड है? मार्क्सिज्म आपकी एक बेस और सुपर स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म? दैट मीन्स माय मटेरियल रियलिटी डिटर्मिन्स माय सुपर स्ट्रक्चर। मैं कहाँ पे जाऊंगी, कहाँ पे शॉपिंग करूंगी, कौन से स्कूल में पढ़ूंगी, कौन से स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, ऑल दैट इज डिटर्मिन्ड फ्रॉम माय इकोनॉमिक मटेरियल रियलिटी। सो मेरा जो बेस है दैट डिटर्मिन्स माय सुपर स्ट्रक्चर, राइट? मेरा जो फंडामेंटल इकोनॉमिक बेस है वो क्या करेगा? वो मेरा सुपर स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। अब न्यू मार्क्सिज्म क्या करता है? न्यू मार्क्सिज्म यही चीज आपको बताता है। ठीक है, सो मार्गरेट थैचर ना जब आई थी, मार्गरेट थैचर जो लीडर थी ब्रिटेन की, जब वो आई थी, जब वो रूल कर रही थी, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वी विल क्रिएट अ क्लासलेस सोसाइटी। उन्होंने कहा वी विल क्रिएट अ क्लासलेस सोसाइटी। नाउ दैट इज नॉट ट्रू। व्हाई इज दैट नॉट ट्रू? दैट इज नॉट ट्रू बिकॉज योर इकोनॉमिक बेस डिटरमिन्स योर सुपर स्ट्रक्चर। और इसे पेरेबर्ड्यू, न्यू मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? इसे पेरेबर्ड्यू कहते हैं कल्चरल कैपिटल और सोशल कैपिटल। इसे वो क्या कहते हैं? he calls it cultural capital और he calls it as social capital। वो इसे cultural capital कहते हैं या इसको social capital कहते हैं।
What do we mean by that? That means अगर मेरा जैसा base है, see I am not going to hang around with Isha Ambani. Why? Because मेरा economic base ही वैसा नहीं है. I cannot afford buying a dress which is going to be worth say 3 lakhs, 4 lakhs, buying slippers which are going to be 6, 7 lakhs and go to those parties. तो आपका जो economic base है, that actually determines your super structure. आप किस लोगों के साथ mingle करते हैं, कैसे mingle करते हैं, that also is important. So your cultural capital so superstructure जो मार्क्स बोलता है, वो न्यू मार्क्सिस्ट को क्या कहते हैं, इसको कल्चरल कैपिटल कहते हैं, या इसको सोशल कैपिटल कहते हैं. पेरी बर्ड्यू फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में लिखता है, वी आर टेल यू ऑल्सो. तो बेसिकली हम क्या देख पा रहे हैं, वी आर एबल टू सी दैट देयर इज दिस कनेक्शन बिटवीन बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर. मेरे बेस और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में एक तरह का रिलेशनशिप है, और इसे मार्क्सिस्ट क्या कह रहे हैं, इसे मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं. राइट, all of these are excerpts from books that I'm trying to tell you so that you understand कि हर एक बुक को आपने कैसे पढ़ना है. राइट, आप अगर ये जैसे साराप स्टोन लेते हैं तो आपने कैसे साराप स्टोन को यूज करना है, या पीटर बेरी ले रहे हैं तो आपने उसको कैसे यूज करना है, आपको एक फंडामेंटल बेस बनाना पड़ेगा. नो वॉइस, नो वॉइस इज देयर, ऐसे मत डरा दिया करो विशाल. हाँ, विशाल, सो वॉइस आ रही है. ओके, सो अगेन ऑल दीज थिंग्स बिकम इम्पोर्टेंट. नाउ आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी है आपका जो एलिजियंस है, आप क्या सोच रख रहे हैं. ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल से कि मार्क्सिज्म कह रहा था दैट हैव्स एंड हैव नॉट्स, उनके बीच में अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, देयरफॉर वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड विल यूनाइट. मार्क्सिज्म में दो तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. What are these terms? These terms are that workers of the world unite. Workers of the world will unite and they will usher a revolution. तो ये मार्क्सिज्म क्या कहता है? It says workers of the world, workers of the world unite. And ये unite करके क्या करेंगे? ये unite करके they will bring a revolution. ये unite करके what will they do? Unite करके they will bring a revolution and that will bring change. लेकिन change नहीं आ रहा था. Change क्यों नहीं आ रहा था? Because dominant ideology हमें mingle करने नहीं दे रही थी. And this is where a new Marxist comes in. देखो, ओल्ड मार्क्सिज्म क्या कह रहा है, ओल्ड मार्क्सिज्म कह रहा है इक्वालिटी लेके आओ. न्यू मार्क्सिज्म कह रहा है इक्वालिटी नहीं आ पा रही है, इक्वालिटी इज नॉट कमिंग. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट. सो दैट इज व्हेन वी आर एबल टू सी दैट थिंकर्स लाइक लुई अल्थुसर आर कमिंग. राइट, दिस इज व्हेन थिंकर्स लाइक लुई अल्थुसर आर कमिंग. कल की हम लोगों ने क्लासरूम क्लास में भी बोला था कि एंटोनियो ग्रैम्शी द इटालियन थिंकर, ही इज राइटिंग प्रिजन नोटबुक्स. वहां पर वो कॉन्सेप्ट देते हैं हेजेमनी का. कल्चरल स्टडीज के क्वेश्चन क्लास में, if you remember करके 9:30 क्लासरूम क्लास में we had talked about it, right? So आइडियोलॉजी क्या है, ये इनविजिबल एक इनविजिबल अलीजियंस है, एक इनविजिबल कनेक्शन है जो आप दे रहे हैं. So what is ideology representing? Ideology is representing this imaginary relationship between individuals to their real conditions of existence. जो उनकी real conditions of existence है उससे ये डिटर्मिंड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. सो अगेन यहाँ पर बाय द वे लुई अल्थुसर आपको आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस के बारे में बताता है. जैसे आप मॉल्स में देखेंगे कि बेगर्स नहीं आ पाते हैं, तो दैट इज आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस. तो स्टेट कोशिश करता है कि वो वही करे जो जो वो करवाना चाहता है. एंड रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस में क्या आ जाएगा, अगर इफ आई डोंट बिलीव इन व्हाट इज बीइंग सेड, रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस में वो मुझे जेल में डाल देंगे. राइट, so what are you able to see कि he says that ideological state apparatuses दो तरह से आपके काम करते हैं. एक हो जाता है आपका ideological state apparatus, ideological state apparatus, और इसको कहते हैं ISA, schools हो गए, institutions हो गए, और repressive state apparatus जहां पर वो coercive measures यूज करते हैं. दैट मीन्स वो आपको डांटते हैं. जैसे समथिंग दैट इवन फुको ने बोला हुआ है डिसिप्लिन एंड पनिश के अंदर, कि डिसिप्लिन एंड पनिश में कैसे एवोल्यूशन ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स हुआ है. बाय द वे दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. ओके विनी बच्चे, व्हाट इज योर मैसेज? आई एम एबल टू सी इट बच्चे. सो अगेन व्हाट आर वी एबल टू सी कि इस तरह से अल्थुसर गिव्स अस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपलेशन. देखो, जैसे हम इफ यू ड्राइव, अगर आपको पता होगा कि कैसे अगर आपको ट्रैफिक पुलिस ने देख लिया है, या तो आप रुक जाएंगे. राइट, सो व्हाट इज दैट, दे हैव मेड अस दैट सब्जेक्ट्स, दे हैव इंटरपलेटेड अस, दे हैव इंटरपलेटेड अस.
They have used both ideological state apparatuses and they've also used repressive state apparatuses. Repressive state apparatuses जैसे लॉ कोर्ट, कितनी बार हमने देखा है कि पुलिस का केस हो जाएगा, लॉ का केस हो जाएगा. इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? काफका देता है ट्रायल में, राइट? इन द ट्रायल यू आर एबल टू सी हाउ द टोटलिटेरियन regime is getting criticized altogether. Okay, so please याद रखिएगा. Okay, so please remember that. Okay, now what is hegemony? What do we mean by hegemony? What do we essentially mean by hegemony? Hegemony is your overall invisible control. ठीक है, तो जो आपका इनविजिबल कंट्रोल है, दैट इज हेजेमनी, राइट? दैट इज हेजेमनी. ऑल ऑफ these are what? These are all neo Marxist ideas, right? These are all neo Marxist ideas that we are able to see. No worries, Vinny, but I'm not able to see your message, bache. Okay, so please keep that in mind. Okay, so please over here remember. See, आपको ये याद रखना है, previous year's questions enable you to understand the trends, the patterns, ठीक है? जैसे सीआर तेतरवाल एक टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने पहले शेयर करी थी, मैं एक और बार कर दूंगी. उसमें वही बताते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बार बार, आपको क्यों पता है कि जेन ऑस्टिन या वॉल्टर स्कॉट से क्वेश्चन आएंगे 19th सेंचुरी राइटिंग्स में, या थॉमस हार्डी पूछा जाएगा, बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट, राइट? Okay, so please keep that in mind. Now, when we're looking at all of these people, like Althusser, को अभी हम लोगों ने देखा, he talks about it. Then we are also having another important neo-Marxist thinker, like I told you, the Italian Marxist Antonio Gramsci. तो Gramsci भी हैं, who's playing a very pivotal role. Gramsci hegemony के बारे में बताते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं है, but we are getting control. हम लोगों को पता ही नहीं है, but we are also getting controlled altogether. Okay, so please keep that in mind. No, Vinny, I haven't. Anyway, so again, you really need to remember, you really need to keep in mind, you really need to have proper understanding of this. तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा. Now, very important. एक जो और इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजी है, देखो अब जैसे आप पूरा पीटरबेरी पढ़ोगे तो उनमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, मार्क्सिज्म का क्या नोशन है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रियलिज्म. और यहाँ पर आता है एक इंटायर कॉन्सेप्ट, ठीक है? यहाँ पर आता है एक इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सम मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स से आर्ट हैज टू बी सोशली पर्पसिव, आर्ट नीड्स टू सर्व एन एजेंडा. आर्ट को क्या सर्व करना है? आर्ट हैज टू सर्व एन एजेंडा, आर्ट हैज टू सर्व अ पर्पस ऑल टुगेदर. दैट इज व्हाट यू रियली नीड टू रिमेंबर, ठीक है? सो व्हाट आर able to see, you are able to see that here comes people like Lucas. Lucas is a very important Marxist thinker, and Lucas क्या बता रहे हैं? Lucas कह रहे हैं जो मॉडर्निज्म avant-garde लिटरेचर है, ये लिटरेचर सही नहीं है. ये लिटरेचर सही क्यों नहीं है? Because it is not enabling us to understand the historical dynamics. हिस्टोरिकल डायनामिक्स मतलब कि डोमिनेंट आइडियोलॉजी कौन सी है, कौन है पीपल इन पावर, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. तो आपको ये वाली पॉइंट भी याद रखना है. आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जॉर्ज ल्यूकास इज नॉट इन फेवर of modernist style of writing. Why is he not in favor of modernist style of writing? Because you are able to see that this modernist style of writing, ये जो modernist style of writing है, this modernist style of writing unfortunately is not taking in the historic reality. ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? He tries to tell you, this is what he says in works like the historical novel या studies in European realism. वो कहते हैं कि आपको एक ऐसा मॉडर्निज्म को नहीं फॉलो करना चाहिए. यू शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड वर्क्स जो हिस्टोरिकल रियलिटी के बारे में बोलते हैं, ठीक है? सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. डू रिमेंबर दैट whenever we are looking at, whenever we are talking about, right, whenever we are discussing all of these thinkers, तो आपको कुछ बुक्स में मिलेंगे, कुछ में नहीं मिलेंगे.
करेंगे. The thing is you have to compile everything together and have a focused nuanced understanding. लुकास से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए. ठीक है. So Lucas is trying to tell you and Eric Orbach जो कि नॉवेल के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी देते हैं. Eric Orbach has also come in your net exam, by the way. You should all know about Eric Orbach also. You should all know about Eric Orbach. Eric Orbach ने My Misses के अंदर he has talked about a very similar thing. अब इसके कंपैरिजन में फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ स्कॉलर्स, लूकास ने क्या कहा, मॉडर्निज्म इज नॉट गुड बिकॉज मॉडर्निज्म हिस्टोरिकल फोर्सेस को इग्नोर कर देता है. फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स, उनको भी मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स बोला जाता है. फ्रैंकफर्ट स्कूल सेज नो, because modernism had the ability to fight against a traditional dominant way of writing, therefore it is radical. अब आप समझ रहे हो जॉर्ज लुकास क्या कह रहा है. जॉर्ज लुकास कह रहा है मॉडर्निज्म सही नहीं है बिकॉज मॉडर्निज्म रियलिज्म को नहीं दिखाता है. ठीक है. एंड सेकेंडली हम लोग क्या देख रहे हैं, सेकेंडली हम लोग देख रहे हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आते हैं यहाँ पर. और फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ स्कॉलर्स एक बहुत सिंपल सी चीज कह रहे हैं. वो ये बोल रहे हैं कि ओके फाइन अंडरस्टूड, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि रियलिज्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट. और जो आपके मार्क्सिस्ट जो आपके मॉडर्निस्ट राइटर्स कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ट्रेडिशनल डोमिनेंट वे ऑफ राइटिंग. एक जो डोमिनेंट वे ऑफ राइटिंग था, जो एक्सेप्टेड था बाय द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, उसको वो हट रहे हैं, उससे वो हट रहे हैं. Right? So please keep that in mind. Please remember all of that. This is something that you'll have to keep under your consideration. अब फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ स्कॉलर्स कौन कौन है, यही लोग हैं who are also inspiring cultural studies. Frankfurt School is also they are called the new left, right? They are called the new left altogether. ये ल्यूकास के against जा रहे हैं. They are associated with what is called as critical theory, right? So what is Frankfurt School associated with? It's associated with critical theory as well as the Institute for Social Research in Frankfurt. So Theodore Adorno writing Free Time, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, all these are people associated with the Frankfurt School. तो जॉर्ज ल्यूकास एक टाइम पे आ रहा है, फ्रैंकफर्ट स्कूल दूसरे साइड पे आ रहे हैं. एंड these people are saying कि आर्ट इज क्रिटिकिंग आइडियोलॉजी, आर्ट इज क्रिटिकिंग आइडियोलॉजी, वो यही बता रहे हैं. So that is what they're saying कि art is exercising its subversive power. उसका जो subversive power है by fighting against the dominant ideology. That is what you're able to see. और यहाँ पर because we are talking about Marxism and its correlation with art, it becomes very important for all of us to also know about. I'll just hide myself, or maybe I'll, yeah, I think I'll hide myself only. I'll tell you about Bertolt Brecht. Now, why is Brecht important? Why is Brecht important? Now, we are able to look at that Brecht is important, Bertolt Brecht is important, because Brecht is coming and he's telling you about the alienation effect. He wants to tell you कि आर्ट आपको कथारसिस करके एक्शन नहीं होगा. बेसिकली मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं आप एक्ट करें, आप एक्शन करें. दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर देम. So they want you to actually make sure कि you are not using conventional forms altogether. आप उल्टा थोड़ा हट के काम कर रहे हैं, like मदर कारी जाना चिल्ड्रन में, थ्री पेनी ओपरा के अंदर. All of these works, what are they trying to basically do? They are trying to tell you that art will make you reluctant, right? Art will make you reluctant, but आपने ensure करना है that you get yourself alienated so that you understand how important action is. Right? So आपका Bertolt Brecht was a lifelong Marxist. That is what we are able to see. जॉन ऑसबॉर्न को एंटरटेनर, वहां पे जानबूझ के आपको बताया जा रहा है कि दिस इज थिएटर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. Carol Ann Duffy, the first, queer sort of poet laureate that we had, she was also writing. She was reworking on Every Man. परसों हम लोगों ने कहा था कमला शमशी is rewriting Sophocles' Antigone. Carol Ann Duffy is rewriting the play, the morality play Every Man, which opens with the caretaker clearing the stage. So you are yourself trying to shake the audiences altogether. So please keep that in mind. Please remember that whenever we are looking at, whenever we are talking about all of these things, whenever we are looking at all of these things, we are able to see that these Marxist scholars want us to get jolted. हम वो चाहते हैं कि हम action करें.
यहाँ पर आ जाता है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मार्क्सिज्म इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रैक्सिस। मार्क्सिज्म किस पे बेस्ड है? मार्क्सिज्म इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रैक्सिस। Oh my God. Marxism is based on the theory of praxis. That means action oriented. It is just not a sociological commentary, right? So workers of the world unite in order to change the world. That is what they're trying to tell you. और यहीं पे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मार्क्सिज्म, और आप इसको कैसे देखोगे, यहीं पे आपके फ्रेडरिक जेम्सन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड टेरी ईगल्टन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट? सो फ्रेडरिक जेम्सन आपको क्या दे रहे हैं? फ्रेडरिक जेम्सन इज राइटिंग मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। वी आर ऑल इन द टाइम्स ऑफ लेट कैपिटलिज्म। अभी क्या हो रहा है, जब इन्फोसिस का पर्सन 70 आवर वर्क आवर बोलते हैं, वर्क वीक बोलते हैं, व्हाट इज इट? वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपर कैपिटलिज्म। वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो डोमिनेंट आइडियोलॉजी कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी हो गई है। एंड ईगल्टन क्या कहते हैं? ईगल्टन कहते हैं दैट avant-garde लिटरेचर का जो फंक्शन है, यू आर एबल टू सी के अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट समथिंग दैट इज फाइटिंग अगेंस्ट द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, इट रादर प्रिजर्व्स द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, क्योंकि सही चीज से वो आपकी डायरेक्शन हटा रहे हैं। So if you make a mind map, what is happening? Lucas कहता है मॉडर्निज्म खराब है, फ्रैंकफर्ट स्कूल कहते हैं नहीं मॉडर्निज्म खराब है, वो रेडिकल है। देन ईगल्टन आके दोबारा से कहते हैं नहीं, ही इज सेइंग एग्जामिन वो जो मॉडर्निस्ट मूवमेंट है, इट इज अपहोल्डिंग द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, क्योंकि अगर मुझे इलियड नहीं समझ में आता है, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग टू चेंज माय सोसाइटी। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर एबल टू look at, okay, that is what we are able to see। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है, okay, so please remember that। Now one more thing that you have to keep in mind is that when we are talking about, when we are discussing overall the overall understanding of Marxist philosophy, हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? thinkers like Stuart Sim। so Stuart Sim, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा जा सकता है। Stuart Sim is associated with post-Marxist, right? Post-Marxism, intellectual history. This is what he is associated with. This is what he is associated with. Okay, and he is trying to tell you कि Marxism को लोग गलत समझ रहे हैं, especially because क्या हो रहा है with the Marxist regime, and that is something that we really need to, work towards, because Marxism at the heart of it is not a bad philosophy। ओके, एंड तभी आपके ये सारे के सारे थ्योरिस्ट दे आर कमिंग, दे आर गिविंग यू फ्रेमवर्क्स ऑफ यूजिंग मार्क्सिज्म, जैसे फेमिनिस्ट मार्क्सिस्ट हो जाते हैं, वो टॉक अबाउट इकोनॉमिक कंडीशनिंग ओवरऑल। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर थिंकर्स लाइक बर्ड्यू कमिंग, ठीक है, थिंकर्स लाइक बर्ड्यू आर कमिंग इन। सो बर्ड्यू आपका आ रहा है, बर्ड्यू इज आल्सो टेलिंग यू, माय गॉड व्हाई इज दिस, yeah, Bourdieu is also trying to tell you in cultural reproduction and social reproduction, he tries to tell you about other forms of capital like social capital। तो काफी सारे वर्क्स आप इंटेरोगेट कर रहे हैं। सो अगेन ओवरऑल कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जब भी आप कोई भी बुक उठाते हैं, जैसे कल हम लोग सारा स्टोन को देखेंगे, उसके एक सर्ब्स को अच्छी तरह से देखेंगे, यहाँ पर भी कुछ कुछ सर्ब्स मैंने वही वाले डाले हैं। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर इज whenever you pick up a book, आप उससे सबसे पहले तो अपना खुद का स्ट्रक्चर क्लियर कीजिए अपने नोटपैड के अंदर, इंश्योर कीजिए, वेरी गुड कस्तूरी, इंश्योर कीजिए कि आपका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्लियर होगा। आप और रिसोर्सेज देखिए, जैसे जॉर्ज ल्यूकास नहीं है प्रॉपरली गिवन पीटर बेरी के अंदर, मार्क्सिज्म के अंदर, पेरी बर्ड्यू अच्छी तरह से गिवन नहीं है, न्यू मार्क्सिस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से गिवन नहीं है, टेरी ईगल्टन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, सिम का जो पोस्ट मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट है वो नहीं दिया गया है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके नोट्स फ्रैंकफर्ट स्कूल का पूरा नहीं है, तो आपको इंश्योर, इन सबसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। Supratim, Eagleton says that no, don't consider modernism to be a part of, being a radical movement. It was a part of the dominant ideology, right? That is what he tries to talk about. Okay, so please ensure कीजिएगा, you will have to remember, you will have to keep in mind that whenever we are looking at Marxism overall, whenever we are talking about Marxism overall, तो एक रिसोर्स आपने नहीं पढ़ना है, यू विल हैव टू कोलेट एंड मेक श्योर दैट आप पूरे के पूरे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करें। आज का और कल का क्लास एक्चुअली जॉइंट है, ठीक है, तो आज जो हम लोग ये कर रहे हैं और कल जो हम लोग करेंगे, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी जॉइंट टुगेदर। सो आई वुड
rather say आज का class कल, it is like to be continued. So I will share of course the PDF of this class also so that you can take a look at it, take a tour of it. उसको आप रीड कर लीजिएगा और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज डू लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन. एनी अदर हेल्प दैट यू नीड, एनी अदर टॉपिक सपोर्ट दैट यू नीड, आपको लग रहा है किसी टॉपिक पे आपके पास मटेरियल कम है, किसी टॉपिक के ऊपर आपके पास कंटेंट नहीं है, या किसी टॉपिक के ऊपर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. दैट विल हेल्प अस प्लान द नेक्स्ट वीक सेशंस बेटर, इवन दो नेक्स्ट वीक हम आपकी हाइपर प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करने वाले हैं. फाइन. Thank you so much, everyone. Celebrate India's victory in a proud manner all together. I'll catch up with all of you tomorrow. And in case if there are any other doubts, please feel free to let me know about it. ठीक है? कल का जो सेशन है उसमें हम लोग सारा अपस्टोन को अच्छी तरह से देखेंगे. आज भी कुछ कुछ एक्सर्प्स वहां से हम लोगों ने देखे हैं. एंड वील ऑल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस. लेकिन आज का आपका होमवर्क है 2020 का जो पेपर है. Please definitely cover that. All right. Thank you so much, everyone, for joining in. I'll catch up with all of you tomorrow. And in case if you're having any further doubt, please make sure that you are able to put that in the comment section. Fine. Thank you so much. God bless you all. Take care. Bye. Thank you.